Hey guys, I welcome you all on today's video learning session. This is your educator once again, and this is a kind of a small information about me. If you want, you can go through it. Right? I am biotechnologist by profession, and right now I am teaching. Teaching and learning is my passion. And if you have any doubt query, you can simply mail me or you can message me on my personal WhatsApp number. UPSC and the PCS aspirant and cleared some pre-examination in 2017 and WBCS in 2017 as well. So, without using a single second, let's start today's topic. So, today we are going to cover up the NCERT Class 10 History, the French Revolution, and the idea of nation. We already started the idea of nationalism. In my previous video, I have given you the information about some painting about that allegory. I hope you remember. If you don't, I request you go back to the previous video, watch it, and you'll get to come to know. Now, this is a kind of a just a kind of a summary, or you can say a kind of a revision for you people, for the class 10 students. If you have understood the class 9 French Revolution, then there is nothing to you. It's just a kind of they wanted the author, the NCERT, or the CBSE, they wanted you to do the revision so that you understood that what actually the nationalism means, or what actually the the idea of nationalism, how it emerged from France and how it spread to the other countries, what were the conditions, what are the scenario, these things have mentioned, and you have to understood this, right? So this is only just a kind of revision. If you haven't if you forgot the class 9 the French Revolution topic. So I request you. I have made already videos on the French Revolution, and I have posted it as well. So if you want, you can just go and you can just go through it, learn through it, right? Anyway, let us go and let us try to understand that why it is important once again, right? So a French Revolution was a torch bearer for the entire Europe, right? It means it gives the idea of again liberty, equality, and the fraternity, right? Again, see, I have the word, just see this highlighted word sentence. I have used the sentence French Revolution was the torch bearer for the entire Europe. यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच क्रांति ही वो चीज बनी, या फिर फ्रेंच क्रांति ने ही अगुवाई किया, जिसकी वजह से पूरे यूरोप में जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, जो नेशन की, जो कि हमारा अपना नेशन होगा, अपना डेमोक्रेसी होगा, अपनी राइट्स होगी, वोटिंग राइट्स होगी, इसकी जो जड़, जो उत्पत्ति होती है, जो 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 ओरिजिन प्लेस होता है, वो होता है फ्रांस। और इसी वजह से कहा गया दैट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज अ टॉर्च बेयरर फॉर द एंटायर नेशंस, बिकॉज whenever we heard the words like liberty, equality, fraternity, these are the words which ultimately and gradually came up by the French Revolution, और इसी ने पूरी दुनिया को पढ़ाया। और इसी वजह से देखो, these three words is also included in our Indian Constitution: लिबर्टी, इक्वलिटी, फैटर्निटी, आज़ादी, राइट, समानता का अधिकार, और बंधुत्व का अधिकार, और भाईचारे वाला जो फीलिंग हो उसकी वजह से, राइट? So French Revolution, it gives the idea of these things. Now become the first country to have its own flag after the liberation from monarchy. It means, it becomes the first country in the world, it becomes first country in the Europe, who gradually uh, end the monarchy, established its constitution, and gives the world the idea liberty, equality, and fraternity. Plus also it gives the idea that yes, if we are having the country, if you are having the liberate country, if you are having the country where everyone is equal, then we must have a symbol, we must have to symbolize ourselves। और उसका जरिया क्या बना, उन्होंने अपना खुद का जो तिरंगा बनाया, खुद का जो, जिसको हम लोग झंडा या हमारे यहाँ तिरंगा बोलते हैं, उस खुद का उन्होंने फ्लैग बनाया, और ये दर्शाया कि भैया अब वी आर ए नेशन एंड नाउ वी आर नॉट इन एनी काइंड ऑफ बाउंडेशन। तो ये सारी चीजें फ्रेंच रिवॉल्यूशन में उभर कर आई। पीपल रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन पैट्रियटिज्म एंड द नेशनलिज्म। अब देखो, also the people, make the peoples have the essence, the peoples, realize that what is difference between the patriotism and nationalism. Now these are both are, quite similar but not equal. I am using, they are similar but not equal. The reason is that जरूरी नहीं कि आप पैट्रियोटिक हो तो आप नेशनलिस्ट भी हो। इफ आई एम सेइंग दिस टू वर्ड्स आर टोटली डिफरेंट, अगर
मैं पैट्रियोटिक हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नेशनलिज्म हूँ। राष्ट्रवादी होना और देशभक्त होना दोनों दूसरी बात है। सपोज इफ आई से दैट आई एम अ पैट्रियोटिक, है ना, मैं एक देशभक्त हूँ, तो इट मीन्स आई कैन गो एट एनी एक्सटेंट। इट डजेंट मीन दैट आई हेट माई कंट्री, इट मीन्स आई लव द कंट्री एंड आई कैन गो एट एनी एक्सटेंट फॉर द सेक ऑफ माई कंट्री। अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और साथ ही साथ उसी वक्त अगर मैं कहूँ, इफ आई से दैट आई एम अ नेशनलिस्ट, सो इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट आई लव माई कंट्री। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने देश के लिए जान दे दूंगा। मैं राष्ट्रवादी हूँ, देश के लिए जो सही होगा, जो उचित होगा, जो प्रॉफिटेबल होगा, आई विल डू दैट, आई विल परफॉर्म दैट। पर अगर मुझे कोई बोल दे, अगर इफ आई एम नेशनलिस्ट, कि अगर मैं नेशनलिस्ट हूँ, अगर कोई मुझे बोल दे कि ठीक है, द पाकिस्तान और वी हैव अ वॉर विथ चाइना एंड वी नीड यू बिकॉज यू आर द सिटीजन, आपको जाके बॉर्डर पे लड़ना है, अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाना या फिर उनका हेल्पिंग हैंड बनना है, तो जो नेशनलिस्ट होंगे वो नहीं जाएंगे, क्योंकि एज ए आई एम अ नेशनलिस्ट, आई एम नॉट अ पैट्रियोटिक, राइट। नेशनलिज्म का मतलब होता है ऑल दो आई लव माई कंट्री बट इट डजेंट गिव मी और इट डजेंट अलाउ मी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने देश के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो जाऊँ। हाँ, मैं देश के लिए वो सब कुछ करने को रेडी जरूर होऊंगा, विच which make my country proud, which make my country to move ahead, but it doesn't equal to the patriotism. However, the whenever we word the patriotic or patriotism, it means जो देशभक्त, चाहे वो देश के लिए लड़ना पड़े, मरना पड़े, या फिर देश के लिए कहीं भी खड़ा होना पड़े, दे विल स्टैंड। तो पीपल को ये अंडरस्टूड हुआ, पीपल इन रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन द पैट्रियोटिज्म एंड द नेशनलिज्म। उनको समझ में आया कि दोनों में अंतर क्या है। एक होता है नेशनलिज्म, एक होता है पैट्रियोटिज्म। व्हेनेवर वी से पैट्रियोटिज्म, इसका मतलब हुआ कि आप देशभक्त हैं। नेशनलिज्म, आप राष्ट्रवादी हैं, आप राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, पर राष्ट्र के लिए आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे या नहीं रहेंगे, हु नोज, राइट, बिकॉज इट्स फुली डिपेंड ऑन मी। क्यों? क्योंकि हमें क्या का आइडिया मिला है, लिबर्टी का, इक्वालिटी का, फ्रैटर्निटी का, जो मुझे हक देता है कि मैं आज़ाद से रहूं। चाहे अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर मैं इफ आई एम इन द कंट्री देन आई विल die myself. Of course I will die myself if I am patriotic, right? So this is the difference between the patriotism and nationalism, and people have understood. Now the revolution proclaimed that it was the people who would henceforth the nation and shape its destiny. साथ साथ उसने दुनिया को ये भी पाठ पढ़ाया, ये भी आइडिया दिया that the people is the main ultimate power with whom all the सेंट्रल पावर, ऑल द मेन पावर लोकेटेड, राइट। यानी जनता जनार्दन ही ऐसी चीज है, वहां के लोग ही में, लोग के अंदर ही मेन पावर बसती है, और उसी इसके जरिए किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का फेस, सूरत बदल सकती है, और आगे चल के वो नेशन का शेप ले सकती है। जैसे कि फ्रांस ने एक नेशन का शेप लिया आफ्टर द रिवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth the nation and shape its destiny. I hope you understood. Let's move towards the next slide. It also it also gives the lesson to the entire world. It was the people who introduced and did various practices and collectively show their notion that they want to be united, right? वहाँ के लोग ही थे, वहाँ की जो पब्लिक ही थी, जनता ही थी, they involved in some different activities, right? They fought together, they realized together, and it was the people who just who came forward and destroyed and ultimately collapsed the prison fortress, that is the, I hope you आपको नाम याद होगा, the name is what, the name is Bastille Fort, right? I hope you understand, आपको you are remembering, right? तो ये सारी चीजें पॉसिबल कब हुई, ये सारी चीजें पॉसिबल हुई when the people have introduced, यानी to make a nation, to frame a constitution, and to end up with any kind of monarchy, right? The main key role play is that the people of that country, right? So it also you know uh, gave a lesson to to the other parts of the country, to the others nation, that it was the people जिसके हाथ में ultimate power है, अगर वो united हो जाए तो, like les citoyen and les patrie, which they are enjoying after the rights they had received after the forming of constitution. और ये राइट जैसे कि हम सारे उन्होंने जैसे जैकोबिन क्लब्स ने इंट्रोड्यूस किया था, ये वी आर द सिटोयन और वी आर द सिटीजन्स, राइट, हम हाँ कि हम ले पैट्री हैं, राइट। और ये सब राइट्स उनको कब मिले, आफ्टर दे फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर दे लेट दिस रिवोल्यूशन अहेड। इट मीन्स अगेंस्ट द फ्रांस
played a various role in forming and in giving the various rights to the people. In fact, the commoners or the third state had formed the National Assembly by which they came to know about the active citizens, right? And in fact, the commoners or the third state people who are marginalized, who are neglected since ages, but when they came forward, because they have contributed 90% of the total France population, when they came forward, right, when they united and when they have revolted, they not only form the National Assembly, they also grab the different rights, and they also got the title of active citizens. ये कब हुआ? ये हुआ जब वहाँ के लोगों को realized हुआ, again when they become the nationalist, when they are about to become nationalist and when they step forward, right? Song, hymns, and even the national anthem were composed, all in the name of the nation and to end the monarchy, right? In fact, they have composed the several songs, hymns after the introduction of the printing press. The national anthems were composed, like the national, लाइक द वंदे मातरम, जन गण मन वी हैव, राइट? तो ये सारी जो चीजें थी वहाँ के लोगों के लिए काम की, एक्ट एज अ बूस्ट, एक्ट एज अ stimulated hormone, you can say, right, which infuse the feeling of the nationalism in the minds of the common people, that it is not impossible to end the monarchy and we can frame our nation, we can frame our constitution. And these things gradually, these events, these things, right, made an important impact on the mind of the rest of the Europeans. Let's move in the next slide. A centralized administrative system was put in place, and it formulated uniform law for all its citizens, right? Monarchy को हटा दिया गया, national assembly आई, उसने अपना referendum किया, right? They have voted and they have made a centralized administrative system, administration को चलाने का, voting rights को लेने का, they have made us uniform law, एक समान law वो लाए, जिसके according to that, you know the terms like active citizens came into existence, right? I hope you remember. Anyway, regional dialects were stopped and French became the official language. जैसे कि हम हमारे यहाँ बोलते हैं एक देश एक टैक्स, राइट? एक देश एक भारत, जैसे कि if I say one tax, one country, one nation, one tax, then definitely I'm talking about the GST. So this is the portion of economics. I will cover the economics on other talk on some other day. But there are several different dialects. Now what do you mean by dialects? Can any one of you say, please? आप लोग मुझे इसका बताना in the comment box, that what do you mean by the dialects, right? This is a class 8 term from the chapter, आपको मैं chapter का नाम नहीं पर subject का नाम बता दे रहा हूँ, from the subject history से ये word लिया गया है, dialects, right? So regional dialects were stopped and French become the official language. It means the French become the official language. The Jacobin clubs were formed by the educated and learned middle class, right? When the industrial revolution came and when the educated class emerged up, right? Those middle class whose are continuously neglected since ages, now they have emerged up and they formed a different clubs like Jacobin clubs, right? Who played an important role and made some certain rules and regulations. जो इन सब these are the events which gradually and ultimately giving a lesson to the different parts of the world. इनसे ही प्रेरित होकर हमारे यहाँ भी नेशनलिज्म मूवमेंट शुरुआत की गई थी. लीडर्स उभर के आए थे, महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, right, NC Kelkar, different other leaders, Aurobindo Ghosh, many other leaders. In fact, these nationalism feeling led them to do the different movements. जैसे गांधी जी ने अपना movement चलाया, so we also have some revolutionaries like Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad. Their main motive is to just to show their nationalism, just to show become to nationalist and to free in India from the monarchy. हालांकि it was not a monarchy, but it was a kind of monarchy because Queen Victoria was there and kings were ruling from the England, right? Now, activities led by them prepared the way for the French armies, which moved into Holland, Belgium, Switzerland, and other parts of Italy, which carry the idea of nationalism and to other European countries. यहाँ एक country का name का इस्तेमाल किया गया है. Here the word has been used, that is the Holland.
नाउ दिस हॉलैंड हैज़ इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप लोग क्या बता सकते हो कि हॉलैंड से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बॉरो किया गया है? व्हाट थिंग्स और व्हाट text or different principles had been taken from the Holland. Yani, anyway, this is your kind of you can say small homework. If you want, you can answer. Else, I will explain in the next topic. Anyway, let's see. Right, you know where the where the French army were fighting. Right, they were already try to capsize the other parts of the world like Holland, Belgium, Switzerland. Right, जहाँ जहाँ वो गए उन्होंने they have shown, they have explained, they have given the proof that we the people of the France have revolted against the monarchy. We are not against this monarchy system, right? We are against this, sorry, we are this against this monarchy system, and we let our country to free. We want a voting rights. So these ideas were gradually spreaded in the other parts when the armies move in the Holland, Belgium, and the Switzerlands, and again the France play a vital role. Now again the hero, you can say hero, or you can say cruel person in the history of the world history, that is the Napoleon. With the emergence of Napoleon, France witnessed many of the reforms which paved the way for the France to achieve the goal of nation. उसने अब जैसा कि एक नेपोलियन आता है, एक मामूली लो नोबल क्लास का बच्चा, एक लो नोबल क्लास का आदमी उभर के आता है, राइट, विच ग्रेजुअली चेंज द एंटायर फेस ऑफ द फ्रांस. What he did, let's see, his dictatorship, stern rules and regulation, no doubt brought the monarchy to some extent, and the democracy. जब वो आता है तो उसने वो नए नए अपने रूल्स लाता है, रेगुलेशंस लाता है, राइट. ही issued some different notifications, right. He framed some different constitution. But again, it was said in the France that when Napoleon had emerged up, he was he was he was very much popular, and he was largely applauded by the group of people, and he was seen as the messenger of the god. उन्हें भगवान का दूत तक लोग मानने लग गए थे. But at last, after some years, he turned to be in the dictatorship. उसके स्टर्न्स जो रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, कहीं ना कहीं फिर से मोनार्की को ला रहे थे, और जो डेमोक्रेसी वहाँ के लोगों ने हासिल की थी या फिर हासिल करने वाले थे, राइट, उसको नेपोलियन अपने फैसले से, अपने अपने स्टर्न रूल से एंड करने वाला था, राइट. बट हिज रिफॉर्म्स लाइक नेपोलियनिक कोड 18 जो which was introduced in 1804 make the people some rational, like privileges based on birth, equality before the law, secure to right of property was prominent one, right. uh, one more information I want to share you. The period between 1804, that is 1804 to 1813, 1815, this period is known as the Napoleonic War, right. However, he introduced some, as I said, reforms, right, सुधार किए उसने constitution में, जिसको Napoleonic Code बोला गया in the year 1804. Like the and like like he abolished the privileges based on birth, equality before the law, secure to right of property. It means anyone can have the private property. These are the most prominent one. यानी ये जो रस्में थी, ये जो नियम थे, जो सदियों से चलते आ रहे थे, राइट, कि डिवाइन रूल चलेगा, ओल्ड रिजीम के तहत द नेक्स्ट द किंग्स हायर वुड बी द नेक्स्ट किंग. दिस थिंग्स वर abolished, and the Napoleon had just introduced in the Napoleonic कोड, दैट इज 1804, और उसने ये सब चीज़ें उसने इशू किया. इससे क्या हुआ, दिस पीपल, these things make the people rational. रैशनल का मतलब क्या होता है, तर्किक, लॉजिकल सोच रखने वाले, लॉजिक के साथ बात करने वाले, ना कि पुराने ख्यालात और किसी के बहकाव में आके बात करने वाले. When these things were introduced, it makes the people very rational, right. As a result, the European countries like Germany, Italy freed from serfdom and feudal system. साथ साथ इसको देख के जो बाकी जो कंट्रीज थी, उन्होंने भी अपने आप को, जैसे कि द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ यूरोप, सॉरी, दैट फ्रांस, दैट इज जर्मनी एंड इटली, फ्रीड फ्रॉम सर्फडम एंड द फ्यूडल सिस्टम. वहाँ भी जो सर्फडम थे, जो गुलामी थी, जो फ्यूडल सिस्टम था, कि छोटे तबके के लोग प्रीस्ट के घर में जाके, लैंडलॉर्ड्स के घर में जाके काम करेंगे मुफ्त में, जो मिलेगा रुखी सुखी वो खाएंगे. इट वाज एंडेड जस्ट बिकॉज ऑफ द
French Revolution, and about the and from the policy which was introduced by the Napoleon. Right, transport and communication were improved, towns were developed, and even the businessmen enjoyed the new freedom. Right, these things, as we all know, जब कोई भी देश नेशन बनने के कगार पे होता है, उसको जब वहाँ के लोग नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म के बीच अंतर समझ जाते हैं, राइट, एंड व्हेन दे गॉट द राइट्स, व्हेन द प्रिविलेजेस ऑफ बर्थ वेर removed, abolished, it not only developed the mind of the, it not only make the people rational, but it also impact the entire country, जो हम देखने को मिल रहा है, like the transport and communication were developed, right, new towns were developed, and people enjoyed the new freedom. Businessmen and small scale producers of goods began to realize that uniform laws, standardized weights and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another. यहाँ तक कि जो छोटे छोटे businessmen थे, the small scale business, they have also understood, if we have a one law, if we have a one measuring system, one you know selling system, or one buying system, then it also help us to sell the thing, do the business comfortably, right. अगर एक मापक होगा, suppose we have a measuring system kg, right, kilograms, then we have a, right, we have once several laws, right, कि जैसे फॉर एन एग्जांपल इन आवर इंडिया यू कैन से दैट हम खरीदने के लिए बेचने के लिए वी यूज द स्टैंडर्ड सिस्टम, वेजिंग सिस्टम लाइक किलोग्राम, मिलीलीटर, लीटर, राइट. इसी तरह हमारे यहाँ अलग अलग कानून है, यूनिफॉर्म लॉ है कि आप चीनी अगर आप बंगाल में खरीद रहे हैं तो आप चीनी आप बिहार में भी खरीद सकते हो, या फिर किसी दूसरे स्टेट में खरीद सकते हो, है ना. If you are having the license, uniform laws, that is Exama, if you are having the license which was issued from the West Bengal government, it will be applicable for the entire India. Like for me, I am having the license which was issued by the West Bengal government, but it doesn't mean that it only applicable in the West Bengal state, वो भारत के हर स्टेट में एप्लीकेबल होगा. तो ये कब होगा, व्हेन वी हैव द यूनिफॉर्म लॉ. तो वहाँ के लोगों को भी एहसास हुआ कि इफ़ वी हैव द यूनिफॉर्म लॉ, एक प्रकार का मेजरिंग सिस्टम होगा, है ना, एक करेंसी अगर एक जैसी होगी तो बहुत आसान होगा व्यापार करने में, और लोगों को सहजता महसूस होगी. कंट्रीज लाइक ब्रुसेल्स, मेंच, मिलान एंड वार्सो वेलकम नेपोलियन एंड हिज आर्मीज एज अ हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी, राइट. दूसरे कंट्रीज भी नेपोलियन की इस पॉलिसीज को, इस थ्योरीज को, जैसे कि Brussels, right? Brussels or Brussels, whatever. My English is not good, so bear it. Right, Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw. Right, these are the countries which welcome the Napoleon. These laws like a standardized law, measuring system, right, uniform law, privileges or the abolition of privileges of birth. They welcome and they saw his army as a harbinger of liberty. यानी harbinger होता है liberty, यानी आज़ादी देने वाला दूत या वाहक, आज़ादी को भेजने वाला, संदेश भेजने वाला, ढोने वाला वाहक, a kind of a, you can say, liberator, right. But this expression soon turned into hostility and fear as it became clear that the new administration arrangements did not go hand in hand with political freedom. Beside this, policy like increased taxation, censorship, forced conscription into the French armies required to conquer the rest of Europe make the worst condition for Napoleon and his army troops. Right. इट मीन्स, पर धीरे धीरे क्या हुआ, नेपोलियन जो था उसका जो लोग उसको हार्विंगर के तौर पे देख रहे थे, उसके पॉलिसी को लाउडली अप्लॉज कर रहे थे. बट एज ही स्टार्टेड introducing stern law, rules and regulations, these things certainly make the people hostility, उनको एक जो बोलते हैं ना कैदी वाला फीलिंग, या फिर किसी को जकड़ के रखने वाली फीलिंग, वैसी फीलिंग आने लगी. एडमिनिस्ट्रेशन में रोज नए नए चेंजेस आते थे, और वो क्या हुआ, वो लोगों के लिए सहज करना, डाइजेस्ट करना मुश्किल हो गया कि आप हर दिन पॉलिटिकल सिस्टम को बदल रहे हो, अपनी मर्जी का चला रहे हो, जब मन जिस पे अटैक कर रहे हो, राइट. सो उसके जो पॉलिटिकल जो लोगों को फ्रीडम मिली थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाली थी. एंड अल्टीमेटली बिसाइड अल्टीमेटली इन द ईयर 1815 नेपोलियन वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू, राइट, आपको याद होगा. So in this year, he died, and ultimately, after his death, again the France become the full feudal, full-fledged kind of a
कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा और भी जो रीजन्स थे, जैसे कि इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मी रिक्वायर्ड टू कंक्रीज द रेस्ट ऑफ द यूरोप। नेपोलियन की आर्मी कंडीशन बहुत खराब हुई, क्योंकि वो चाहता था कि नेपोलियन चाहता था कि मैं दूसरी कंट्री को भी सीज करना शुरू कर दूं, उस पर भी अधिकार जमा लूं। हर वक्त इंक्रीज टैक्सेशन को बढ़ा देता था, राइट। फ्रेंच आर्मी को जबरदस्ती मूव कराता था। इससे क्या हुआ, लोगों के मन में उसके लिए नफरत पैदा होने लगी, एंड अल्टीमेटली ही वाज डिफीटेड। बट after his defeat, the France become the, entire nation, and it was the France who gave these things, who's learned, who made learned people these things. And the other parts of the world, they realized that these are the very important, and it was the France, it was the France who realized the people that the people should liberate themselves, and people should understand the meaning of nationalism. And from taking lessons from the French Revolution, the other countries like the Russia, right, America, they got independent, right. So these are the things I hope you understood. Yeah, mainly the basic motive of this lesson is to make you understand that what are the roles of the France, how the French Revolution realize the people, make understand the people of the other parts of the other European countries, that what is the nation means, and what are the rights need to be required in the particular nation। एक राष्ट्र के लिए क्या क्या जरूरी राइट होती है, और वो पावर, वो शक्ति किसके हाथों में होती है, ये दर्शाने के लिए इसको फिर से पढ़ाया गया था आपको। इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ रिवीजन, जैसे मैंने बताया था आपको। सो दीज आर द थिंग्स which the people understood, that if we want to liberate, if we want to free, then we need a nation, we need to be liberate ourselves, we need the voting rights, right, we need to get equality, we need to get the liberty, and which and the credit goes again to the nation, that is the France, the people of the nation, right, and others, some different leaders who emerged in the France, like the Jacobins Club, Robespierre, again the Napoleon। अगर आपने, so these are the things, right, again I am saying, if you haven't seen the French Revolution, just go and watch my videos of class 9, you will able to understood। Anyway, this is the end of this lesson. In the next class we will learn more. I hope you understood, right. Till then, stay safe and have a wonderful day ahead, and I hope you liked it. So just keep